अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। आज हम एक और अपॉर्चुनिटी के साथ आप लोगों को ज्वाइन किया है, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन यूएसए, जिसमें आपको सर उमर मासूद जो है वो आप लोगों को कंप्लीट ए टू जी गाइड करेंगे और एंड पर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड, तो वो आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट में पुट कर दें। उसके बाद जो है एंड पर जो है सर जो है वो आप लोगों के कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। तो हम 2 मिनट जो है वो वेट करते हैं ताकि सब स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो है हम अपना सेशन स्टार्ट कर दें। जो भी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आने वाले हैं ना, या न्यू आ गए हैं, तो वो आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट और आने वाला हर ऑनलाइन सेशंस की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि इस स्कॉलरशिप का जो है वो प्रायर टाइम चल रहा है, तो इसलिए हम हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सेशन जो है वो जो है होना चाहिए लाजमी, जिसमें हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइड करते हैं। जस्ट 2 मिनट के बाद जो है वो हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स सब लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आज ज्वाइन कर लें। डेर फैज़ान खदीर अहमद रज़ा अभी जो है वो थोड़ा लीव पर है, क्योंकि उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो है उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। तो वो हमें जल्द ही जो है वो ज्वाइन करेंगे। मेरी बात हुई है उनसे। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से जो है वो अभी से जो है हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। Should we start? Yes sir, you can start now. Uh, or we can wait 2 minutes more. It's up to you. ओके, जस्ट 2 मिनट दे दें ताकि 9:05 पर हम स्टार्ट कर दें ताकि सब स्टूडेंट्स Yeah, ज्वाइन कर sure, लें। sure. इशू ना। थैंक यू सर। So आप भी अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ? हाँ बिल्कुल सर, मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो यार इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर मैं ग्रेजुएट हुआ था 2020 में, तो हम्म, कोविड के बिल्कुल दरमियान में। तो सही है। 2 साल लगे लाइक। और बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक पहले साल कुछ नहीं मिलता आपको, क्योंकि आप एक किस्म के लर्निंग में होते हो, आप सीख रहे होते हो, आपको पता नहीं होता बिल्कुल। क्या डेडलाइंस हैं। फिर मेरा दूसरे साल 2024 आपके ऐसे पास ही गया। मल्टीपल जगह पे स्कॉलरशिप हो जाता है। लाइक मेरे हम्म, साथ हुआ था ऐसे, फिर मुझे 3-4 जगह से मतलब हो गया था। यू लाइक आप फिर ऐसी पोजीशन पे होते हो, आप 3-4 जगह पे आप चूज करते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू स्ट्रगल। बिल्कुल सर। नो सर, ऐसे ही मेरा 2024 जो है वो ऐसे ही गया है सीखने में, ताकि पता पता होता नहीं था कहाँ पर कैसे अप्लाई करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं। तो इस बार जो है वो मैं कोई 40+ स्कॉलरशिप्स के ऊपर और कोई 50-60+ पोजीशंस के ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ। हाँ, यही होता है। तो मुझे भी स्टिल याद है, मोस्ट ऑफ द ईमेल आई गॉट लाइक दे वर लाइक, "ओह, वी आर नॉट शॉर्टलिस्टेड यू फॉर आवर स्कॉलरशिप" एंड आई वाज लाइक, "ओह, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई मोर।" हम्म, So it depends upon how much you struggle. बिल्कुल। और जी स्टूडेंट्स है वो हम अपना सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं सर उमर मसूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम जो है वो निकाला और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो है उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो मैं सर उमर साहब को दावत दूंगा कि वो अपना सबसे पहले इंट्रो करवाएं और उसके बाद जो है वो सेशन स्टार्ट करें और स्टूडेंट्स को गाइड करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। आई स्टार्ट विद, मैं उर्दू में स्टार्ट करूंगा, और क्या नाम है, जी अगर जी जी। किसी को इंग्लिश में करना है ताकि सबको समझ भी आए। ओके। सो मैं बेसिकली हूँ फैसलाबाद से। मेरा स्कूलिंग भी हाई स्कूल
कॉलेज भी फैसलाबाद से मैंने किया है, रीजनल मॉडल कॉलेज से मैंने अपना FSc की थी. देन आई जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद इन BS बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर. 2018 में मेरी वहाँ से डिग्री हुई. उसके बाद 2020 में मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी. सो at that point I felt that oh where we are. So उस टाइम पे समझ आई कि यार I think so we should move abroad. I'm not say Pakistan is a bad country, the people are bad, but there are less opportunities as compared to rest of the world. So that's why you guys are here, that's why I'm already here. So hope so you all will be here too. So ये मेरा basic सा introduction है, or I will just start with the session now. I made a slide like a short slideshow for you. So after that, I can give you like it's like I will say like a hands-on training, or like I can show you how to do it yourself, like how to like navigate for the scholarship. So let me start for the slideshow. So so today we're gonna discuss about like what are the scholarship opportunities in the United States. So I'm gonna present you about that thing, and let's start. So okay, in order to come to the United States, there are three methods that you can come to US. Is that there are three type of funding opportunities for you. I will not use the term scholarship itself because USA don't offer scholarship. To be honest, like I know you guys surprised when you listen that word, that there is no scholarship here, because USA is a like a, I will say, a capitalist country. So in a capitalist country, there is no opportunity for a social welfare or scholarship opportunity. But there are more graduate, I will say, that funded position is are available in United States. So I think so there are 5,000 universities in United States, and in 5,000 universities, yeah, I think so like in your specific field, there's like, if for example if you're from plant science department, and in every department there's, in every university there's a plant science department, and the professors are constantly applying for the grants, and these grants come as a federal grants. And in federal grants there's some research question. In order to answer that question, they always hire students. So that's how the money will come to fund you, or you will say, you can say it as a scholarship. That's how I landed into that opportunity. So the first option is that graduate teaching assistant. The second option is graduate research assistantship, and the third opportunity is the scholarship and the fellowship. 90% students in the United States, including myself, are uh, on GTA or a GRA position, and then 10% of the students who are doing graduate studies, masters or PhD, are on scholarship and fellowships. Okay, so what is graduate teaching assistantship? Let's like narrow it down. It typically involves in teaching undergraduate courses, like, and grading and tutoring. It like, and the money that the undergraduate will pay as a tuition fee, that money will come to you, and it will provide you a stipend and then the tuition waivers. And like, and for that stuff you need a strong communication and subject expertise, like offered by academic department based upon availability. Like for example, it is not offered by a professor itself, it is offered by a department. For example, if I want to apply for the plant science, PhD in plant science, and I applied to the Montana State University, and then I applied to the PhD in plant sciences at Montana State University through online portal through grad school. So when I applied there, my application will land into my department head, and department head said that okay, we need 10 TAs, like 10 teaching assistant this semester, and based upon the specialty, based upon my CV, they can offer me position. Or if like you email to a professor, or you are in a contact with professor, or professor need a student, for example in coming week, in coming semester, for example fall 2025, that will be a coming semester, he don't have money to fund you. Okay, so he asked department head, okay, do you have a graduate teaching
assistant position available this semester, and then he will like he can either post it on the LinkedIn, or uh, or if he already got an email from a student and he want to hire that student, he can, okay, he will like he can talk to student that, okay, you have, there's a GTA position in my department, if you want to apply, just apply it, and then you will get the funding, so you can work with me. And what you have to do is that you have to work 20 hours a week to do the TA ship, and then the rest of 20 to 50 20 to 30 hours you have to conduct research in the lab. So that's how your your study or PhD study or master study will be funded in the United States. That's the first first opportunity that you can avail. So it will cover your stipend. The typical stipends is revolves around $1,800 to $2,500, depend upon universities and depend upon the cost of living of that city. So every university calculate the cost of living in that city where the university is situated. So what university do is that university calculate, okay, how much you have to pay for renting an apartment or renting a room, how much you need to live a, I will say, live a good life. That's what this money will, that's how the stipend will be calculated. And then you have to pay for the tuition, but you are not going for the pay for the tuition because you are a GTA. So your department will allocate some money to pay your tuition fee, and then you don't have to pay anything. For example, this semester I'm doing GTA, graduate teaching assistantship, so I got scholarship, sorry, stipend, I will say, not scholarship, or you can say scholarship. I get stipend of around $2,600, and then my tuition fees paid by my department because I'm teaching for the department. That's how the money flow in the funnel, in this system, I would say. And that's the first thing. Either you can, okay, for this scholarship, let me conclude it. For this scholarship, either you can apply directly to the department through online application. You just, what you have to do is that you have to go to the graduate school, uh, see in which program you can fit in, and just apply for that program. And every university has its own application process, how they evaluate the application. I will narrow it down it to further, but that's how you apply it. And then either you can email professor, and the professor come to you and say that, okay, I don't have the funding for the GRA, that I will explain it later, but I have funding for GTA from the department, and you can, if you are willing, uh, you can join my lab. So that's the first thing. The second thing is graduate research assistantship. So what you have to do is that you are hired by a professor as a researcher. So you don't have to teach how, and then how the money will flow. So you have to engage students, faculty led research projects. So for example, if I have a professor, he applied for a grant, for example, I'm still working in a United States Department of Agriculture NIFA grant. So it's a fellowship where professor applied with a certain research question, and if they got funded, what is that, so they have to hire the resource person for in order to conduct the research. Either they can apply postdoc, either they can hire postdoc, they can hire research associate, they can hire master students, or they can hire PhD students. So how the money will come? So for example, farmers in, just for a broader perspective, I'll say that, for example, United States government need a need a AI system for their computers. Just example. So they post it, okay, the funding is available, just apply for the funding. So professors around, not only professors, even industry, for example, like I can give you example, I think so Tesla is now getting, I think so, billions of dollars. Not Tesla, SpaceX is getting billions of dollars from US government in order to conduct the research regarding some rocket delivery system. This is just the example. So departments can apply, NGOs can apply who are conducting research, non-governmental organizations, uh, uh, open public universities can apply, uh, private universities can apply. Person, I will say, the person in the, they, what they have to do, they have to write a grant and they have to provide it. The best grant will be the funded. So if you are hired as a GRA, you are, that means you are doing the cutting edge technology or a novel research. So how the money will come in that? So when you get the funds, you get the funds, first funds for the
equipment for the for equipment, materials in order to conduct the research, and the second part of the money will goes to provide you stipend, and then another money there is another money that is specifically in order to pay the tuition fee of the student. So, and the stipend of the GRA ship is around $2,000 to $3,000. There are some funded where the scholarship goes up to, I think so, $3,500. For example, the funding from National Institute of Health, that's the Ministry of Health in United States. So that's how the money comes. So what you for that purpose, what you have to do for that purpose, you it requires research skills and alignment with the faculty project. For example, you send an email to professor and he thinks that you are conducting some research. And for example, in my case, I was a biotechnologist or a molecular biologist. So I was conducting research in molecular biology, and my research aligned with my professor. So he interviewed me, Zoom interview, and after that interview, he said that okay, I think so, your research skills is aligned with my project, so I'm going to hire you as a PhD student. So he hired me as a PhD student. So again, offered through research grants and faculty funding. How faculty is getting funds from research institutes or funding agencies. So that's the second type of scholarship you can get, or second type of funding. Another is that's the scholarship. That's what most Pakistani thinks, that's how you can get a fund, but that's in United States only 10% of the students are getting funds through that. So it's a competitive funding opportunity based upon merit, need, or specific criteria offered by universities. Some universities have offered it. For example, Harvard has a fellowship program. MIT has a fellowship program where they have like 10 scholarship around the world. They want to hire government agencies like Fulbright. Chinese government CSE is another example. But if we discuss specifically about the United States, US Fulbright is the only option. And then there's a private organization, for example, Bill Gates Foundation is also providing some scholarship. It may cover tuition fee, living expenses, and in some case it also covers your research cost. So example is Fulbright, Rotary Foundation, university specific scholarship. These are the examples of scholarship and fellowship. How you can apply it? You have to apply through Fulbright scholarship, through websites and through announcement. So what you have to do is that, and the basic requirement in order to get this scholarship, or I will say fellowship, is that your CGPA should matter and your extracurricular activities will also matter. And somehow there's a 10 point where they give 10% where they you will get the scholarship if your research is novel, I will say, if you conducted a novel research. So why research and expertise matter more than CGPA? So after now, let's like why so in order to apply for the USA, I think so the most important thing is your research expertise, and it is matter more than CGPA. So just for an example, my CGPA was high because I don't have any option other than doing anything. Like I don't have, like, my family doesn't has a settled business, no further opportunities, no reference in the government. So that's the only option. But I know some of my friends in United States, they are from India, even they are from Pakistan, their CGPA is like less than 3. So I don't want to name my friend, he's one of my best friend, his CGPA in BS was 2.93. He's still able to come to United States. So, okay, so why it matters is that it's a real world impact, like your ability to conduct meaningful research, solve problem, and contribute to the scientific knowledge, which truly matters in academia and industry, because you are not applying for a undergrad scholarship. In undergrad scholarship, CGPA matter or percentage matter. You are you are applying for a grad school. In order to pass the grad school, you have to conduct research. So the real world impact always matter. And then skills over scores, like for example, my professor will not hire 4 by 4
person who don't know anything about research, but he will hire 3 point CGPA person who know how to conduct research and who has specialties in my professor's domain. And then publication and project speaks louder. For example, if you are having a good CGPA but you are not publishing any papers, means that you are just busy reading or memorizing some stuff other than publishing something like strong research portfolio that publish paper in a peer review articles. Means that you are conducting research that is peer reviewed, and that is novel, I will say. And network building and collaboration, like LinkedIn is the best example, is that professional building professional relationship and contributing to innovative project will take you to further than a high CGP alone. For example, if you are if you are always like in a debate with the professor on LinkedIn that that's the research problem and I'm doing this and this is not happening, and you're coming up with some nice ideas in his comment section, that's how you can build networking and collaboration. So I still remember a friend who used to email professor not for a funding. He used to email professors. Sometimes he criticized the professor's research, or sometimes he said that I so you did that, I think so the next step should be that. And now he's in South Dakota State University, and that's how he got the opportunity. So he emailed professor that this is your research, I don't think so this research is any contribution, or this is the criticism on your research. He provided a criticism on research, and after 1 year that professor emailed him back and asked him, I have a PhD position, do you want to join my lab? So that's how you can build networking and collaboration. There's many other methods to build it. Like if you have time, you I will provide my email address and WhatsApp number. So what you can do is that you can contact me and I can give you some good suggestions how you can do that. CGP is a filter. Another example is that CGP is a filter, not a decider. While a decent CGPA helps, like okay, it always help. I will not say that don't don't get a good CGPA. That's not my point. But it's your ability to apply knowledge and provide results that defines success. Like what is like based upon, especially specifically in grad school. CGPA is a filter. Like for example, in my university, the minimum requirement to get a PhD scholarship is 3 point. Okay, but if you are really good in research, the professor can write a letter to grad school that this person is really good, so he will write a letter for you. But that means CGPA still has a contribution in order to get a scholarship or the funding position. But if you are like really good in research, so then professor can write a letter for you, and that's I think so for every university. So just a single slide. Okay. The things I discuss, why it matters. So that's the example is that, so if you see the master students, 60% master students are without assistantships, means they are on scholarship or they are funding their research from their pocket. And this is also include coursework based masters where you are not conducting any research. But if you see the PhD pie chart, is that there's only small pie where 10% of the students are either on scholarship or on private funding, or they are paying from their pocket for the PhD. 90% of the students in my university, that's the breakdown of my university, that is Montana State University, Bozeman, United States, is that 90% of the students that are hired here as a PhD students are on assistantship, means they are not paying for the money. So that's what I was saying, that 90% of the students are on assistantship, 5 to 10% students are on scholarship, or they're paying it from their pocket. And why is that important? That so scholarship or fellowship has some money. They don't always give you money for everything. They are not giving you money in order to conduct a research. For example, just for my tuition waiver and for my stipend, my department, my professor is paying me at least $45,000 a year. So $20,000, $15,000 for my tuition fee that is paid by my department or my professor, and then $30,000 is paid me in a salary. So that's why
assistantship has more money in order to cover you for everything. So that's just a breakdown. Is that so? When you will come to United States as a no, as a PhD student, you will come as a non-resident. So that's the if you are that's the amount, like $14,557, or minimum is 11,129. That depends upon department or which department you are. That's the semester fee for a PhD student in Montana State University. If you go to the University of California, for example, I will just say the name of University of California Davis, University of UC Davis. The the per semester cost is more than 35,000 dollars. So that money will be paid from a research fund that professor got in order to fund your research. So that's what I have for you today in a slideshow. Now I will give you a, overview how you can find a scholarship, or how you can find a scholarship, or how you can find a funded position, or how to navigate for through the grad school application. So let me share my screen with you first. Okay, I can share that. Wait a second, stop screen. Okay. Share screen. So for example, window. Share my. Okay. So for example, that's the example. So if I wanna say Montana State University, so I will go here. So this is Montana State University website. Okay. So if I wanna go to grad school, so either I can do from here, but the easiest way is that Montana State University Graduate School. So why I need to go to the graduate school first? I will tell you. So if you that's the graduate school website. So all the admissions that Montana State University is evaluating your application till hiring you is under the domain of grad school. So the grad school is responsible for all PhD and master students. So that's the thing. So I'll go to the programs. So these are the programs that are offered by Montana State University. These are all the programs that are offered by Montana State University. Okay, so for example, if I want to do so, I will go to my department because I think so. I know more even of my department than another department. So where is the plant science? Oh man, where's the plant science? So these are all the programs that are offered by Montana State University in grad school, PhD and masters. Oh, I couldn't find plant science department. Okay, I'll just write here. Okay, so here you can see here's the PhD in plant sciences. I'll just click it. So it will tell you how to apply, when to apply. Okay, so this is graduate program for plant science in Montana State University. So this is the link how you can apply it. So this is the general guidelines for the graduate admission prior to Montana State University. Okay, so every department has its, or every university has its own requirement. For example, if you want to apply University of Florida Gainesville, that is another university at University of Montana, is that you don't need a professor acceptance in order to apply it, and they will still evaluate your application. Okay, but in at Montana State University, you need a professor, okay, in order to apply for because if you apply at Montana State University without the consent of the professor, they are not going to entertain your application. So in United States there are two type of universities. First, they just go for open application. So they take every application and they evaluate each application, and then based on the application they navigate this application uh, to the professors that these are the best students, just hire from these students. But in Montana State University, you have to find the professors.
So for example here, the paragraph I highlight, prior to applying to Montana State University, it is recommended that applicant contact department of the intended area of study, as department information requirement and deadlines may vary. Okay, so this is the application link here, where you can see my cursor or not. I think so, you can see my cursor. Yeah, that's okay. So the application fee at Montana State University is $70. Okay, you have to, and that's, these are the requirements in order to apply for the Montana State University. So these are all the requirements. So for example, if you are degree seeking, if you are apply for a PhD, so this is how you will get the admission guidelines. Okay, and then application types, admission decision, international students applications, and then these are after you hired as a student, how you'll get the tuition waiver, what's the fee, what's the hold, enrollment and residency, degree requirement of that program, and graduation. So you just have to go to the first part. For example, these are general guidelines in the grad school for Montana State University. And the reason I'm showing is that this is not solely the case of Montana State University. If you want to apply in other universities, every university has its own grad school, and that's how you can find a program in every university in the United States. The websites are quite similar. So these are general guidelines of the application. What you need these are like personal statement, you need resume, GR score is not required at Montana State University, and how decisions will be made. These are the deadlines for Montana State universities. So if you want to apply for fall, that will start in, so every university has its own deadline. For example, if you want to apply to University of Washington Seattle, the application deadline for the fall semester is 15th of January. Okay, yeah, sorry, 15th of December. And at Montana State University, it's quite late. I will say it's better. So for fall semester, that will be in start in August 20th, 2025. The deadline for the fall application is 15th of May. And that's the for summertime, and for springtime is 1st of October, and spring starts in January 15th. Okay, these are all the requirements you just need. You just need to read everything before applying. Okay, and degree seeking, non-degree seeking, these are okay. So that's how you will locate the application if you want to see. Okay, so in the application process, if you go to the plant science department, it will tell you, okay, it will tell you specifically about the plant science department. Okay, it will tell you how, what you have to do. Okay, so so after reading this, now you have to locate it to the plant science department. For example, I will again Google. So that's what you have to do for every university. Okay. So this is, for example, I will go to Google. So if, for example, if you go to the University of Florida, the website of the grad student, you go there, you apply, you read the what are the requirements and how I can apply for the PIT, and then and it will tell you which program, which department is offering that program. Okay, so now I have to go to Department of Plant Sciences. So it is written there that it is offered by Department of Plant Science and Plant Pathology, that is PhD in Plant Sciences at Montana State University. So this is how I will search it in the Google. So this is the website of Montana State University Plant Science and Plant Sciences program. So it's mentioned in the application that you need a professor already agreed to hire you as a PhD student. Okay, so this is the website. You just have to go to the faculty. Okay, so these are the faculties. So what you have to do is that you have to copy the email from this university list. Okay, and sometimes it's really difficult to locate the department or navigate the department of plants, like of any university. So what you have to do is that you just need the exact name of the department, and you can go to the Google, write the university name, write the department name, and write faculty list, and it will locate you to the page. Google is really good resource. So
This is my wonderful professor. Where is this? Is my wonderful professor, Dr. Ryan Thom. Yeah. Okay. So, for example, if I wanna send email to Mike Judo, he's our department rat, and he's doing some wheat genetics and Jiva studies. If your background is biotechnology or plant trading, so I have two examples of the email. So okay, don't write like a big email to the professor, like okay, so my professor, he don't read all the emails, first thing. And second thing, as a as a professor, he received like at least 2 to 3 emails a day, or sometime more than that, from the students. So for example, here, this is the, so he don't have time to read all the emails. So what you have to do is that, for example, this is a really big email where you just discuss everything, and you attach your CV. He don't have time to read all of your email, like he don't have time. And then you are using unprofessional language, and you are using chat gpt, another thing. So one day, I still remember, one day my professor came to the lab, and he was like joking, I got the email from India. And he was like, students are using chat gpt, they are using the English that we don't, like everybody knows, nobody use it in order to write an email. So he was like that. And so if you're using chat gpt and you are using complex word, they will surely know you are using chat gpt in order to write an email. What you can do is that you can still use the chat gpt, but I can tell you how to do it. And this is another unprofessional way, like respected professor is already respected. You just have, you just, you don't, like, he's not your father, so you have to be respectful. He's not anything else, so you just have to be professional. So that's the example of a good mail. So again, this email is also written by chat gpt, but I asked chat gpt, that's a AI tool, write an email in a casual way. So you can see that this email looks like really casual. So here you just say, hi doctor, that's, he got, if he got the PhD, you have to write doctor, and then you have to provide his last name. That's it. For example, for my professor, hi Dr. Thum. That's it. Nothing else. You don't have to write professor, doctor, or anything. And then that's just a good example. Like, I hope you are doing well. Okay, you are greeting him. And then I came across your research and found it is closely aligned with my master's work at University of Agriculture Festival. I focused on XYZ, that will be your research. I really interested in joining your lab if there's an opportunity. अगर आपके, like, if you have opportunity, you can, I can join your lab. That's what you are. Would love to chat if you have any openings. Okay, and you can. So this is a tricky part. Sometimes they can open your CV, sometimes they don't. So if I'll be applying, I will not attach my CV, because if he look at your CV and he will like, oh, I don't think so, this student is like fit in my research domain, he will not even call you for interview. He will think that this is the waste of time. So if I will do that, I will just like, would love to chat if you are, if you have any opening. That thing, you are still like, your door is still open for an interview. And in interview, you can prepare for the interview, and he will change his mind to hire you as a PhD, and he will hire you as a PhD student. Like, or if you think that your research is like 100% aligned with the professor, and what he's doing you did already, like what he's doing, or what he did in the past, that's what you are doing right now. So at that, if that's the case, just attach your CV. So that's how you'll do it. So then just send the email and wait for the reply. And if you didn't get the reply, you can send an email like after 2 to 3 weeks, like, oh, I sent you email last 2 weeks ago, and I know you are like, being a professor, it's really busy, and let me know. Either he will give you like, I don't have opportunity, I will contact you later, and or he will like, I'm retiring, or he will like ask you for an interview. So these are, so for example, if for just for example, if Montana State University is like other universities where they will like, they entertain like application,
like I will say it open application. You just have to apply now and read all that stuff. Okay, after reading all that stuff, if IELTS is required, just go for the IELTS. If there's another language test requirement, and you think that test is easy, just go for that test. Write a good statement of purpose, attach your CV, and just apply for it. I know it's really difficult to pay $70 an application fees and then you have to apply for the multiple universities, but just save the money. I'm 100% sure if your CGPA is more than 3.3 and you have one or two research paper, or you are conducting research, or you can I'm 100% sure if you apply to 5 to 10 universities, you will surely hired by at least 2 to 3 universities. So that's for the session for today. I have, um, if you need to contact me, I'm going to, yeah, oh, sorry, I can share my sorry, I can share my contact details with you. And first I have to pause my screen sharing. Okay, what I will do is that I will read your question. If you have more question, you can ask me. Oh, we don't have enough questions, so uh, so welcome, sir. Nice. Okay, yeah, eighth semester student. Yeah, I know some Samar B Samar Samar name. Yeah, eighth semester students can apply for the scholarship. Yeah, they can apply. They can apply. How they can apply is that they just they should start reaching to the professors, and they can get their DMC for 6, I think so. If you are in 7th semester, you can still able to get the DMC, detailed marks certificate, till 6th semester. So based upon that university, and then you can get a hope certificate, or I will like, yeah, hope certificate from your university, so you can apply on that basis for the PhD, for the master scholarship. If you are in undergrad, you can even apply directly to the PhD. That's I think that's what for today's session we have. I just show you example. I just navigate you through the uh, application process. Okay. Momit, do you have anything to ask? तो या सर, काइंडली स्टूडेंट्स को ये बता दें कि जब स्कॉलरशिप आपको लग जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो है वीज़ा प्रोसेस खुद करना होता है या यूनिवर्सिटी करती है, और उसका जो है प्रोसेस कितनी यूनिवर्सिटी। देर जो है वो हो अच्छा, जाता है 2 मंथ में, पाकिस्तान और में। डॉक्यूमेंट्स का भी बता दें। अच्छा, सबसे पहले यूएसए में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यूएसए में लैंग्वेज टेस्ट जो है वो लेती हैं, क्योंकि पाकिस्तान नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, तो वो आपकी जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट बना के देती है मीडिया ऑफ इंग्लिश, उसको एंटरटेन नहीं करती। बेस्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट पीएचडी की स्कॉलरशिप की ये है। Is there any opportunity for undergraduate studies? It's really difficult to get opportunity for undergraduate studies because you will get the scholarship, but how you will pay for your own expenses? It's really expensive. It's really uh, expensive to live in United States as a undergrad student. So undergrad की opportunities हैं, fellowship हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा competitive है as compared to grad students, because grad student में यार आप उनको जो रिसर्च करके दे रहे हो, उस रिसर्च से वो बहुत पैसा बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर में रिसर्च कर रहे हो तो फार्मर के आप कितने पैसे बचा रहे हो। अंडर ग्रेड का मसला ये है कि अंडर ग्रेड में आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपने पढ़ के आप ओके आप सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसका डायरेक्ट आउटकम नहीं है। तो इसलिए सो इस अंडर ग्रेड की अपॉर्चुनिटी इशरत रूमी थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल हैं। मुझे इतना अपॉर्चुनिटीज तो हैं, ये नहीं मैं कहता स्कॉलरशिप है, लेकिन बहुत कम है अंडर ग्रेड की। ठीक है, अब मैं एक लड़की को जानता हूँ, इंडियन है, मेरी दोस्त, लाइक वी मेट हर। उसकी सेमेस्टर की फीस यहाँ पे $20,000 है पर सेमेस्टर। शी गेट द स्कॉलरशिप, दैट्स 50%, मीन्स $10,000 की ऑफ हो गया एक सेमेस्टर का, लेकिन $10,000 वो फिर पे करती है। सो
अच्छा, हाँ, बैक टू द मोमेंट्स क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा, सबसे पहले इंग्लिश रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक है? इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर आपने कर ली, यू कैन एबल टू अप्लाई, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोर देन 5000 यूनिवर्सिटीज़ इन यूएसए, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया, मैं आपको दोनों सिनेरियोज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने अप्लाई किया, मुझे प्रोफेसर ने इंटरव्यू किया और उसने कहा कि ओके, मैंने तुम्हें रख लिया है, देयर जस्ट एक सिर्फ एप्लीकेशन डालो, ये एक वो है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम एडमिशन ले लोगे, क्योंकि ही इज़ गोइंग, वो मुझे पैसे दे रहा था स्कॉलरशिप के और स्टाइपेंड के। मैंने एप्लीकेशन फाइल की, ग्रेड स्कूल ने मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देखी, हर चीज़ ने, मेरी लैंग्वेज टेस्ट देखा, मेरी सीजीपीए देखी मिनिमम रिक्वायरमेंट, और बस ये देख के क्या नाम है, मुझे एडमिशन दे दिया, मुझे एडमिशन आ गया। अब ग्रेड ऑफिस ने क्या करना है, इंटरनेशनल ऑफिस होता है यहाँ पे, इंटरनेशनल ऑफिस को मेरी फाइल भेज देनी है, बल्कि भेजनी भी नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है यहाँ पे सारा। उन्होंने मुझसे रब्ता करना है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? और मुझसे कॉन्टैक्ट करके मेरी ईमेल जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया, उस पे कह देना है कि आपको हम वीज़ा फॉर्म भेज रहे हैं, जिसको कहते हैं I-20, ठीक है? I-20 पे लिखा होगा कितने पैसे इसको मिल रहे हैं एनुअली। I-20 पे ये भी लिखा होगा कि ये स्कॉलरशिप पोजीशन है कि नई पोजीशन, क्योंकि वो चीज़ ही वीज़ा लगवाती है। अगर मैं यूएसए फुली फंडेड पोजीशन पे आया हूँ, तो मेरे 90% चांसेस हैं मेरा वीज़ा लग जाए, 90 से 100%। ये तो अभी ज़रा हालात थोड़े टाइट हैं, पहले ये 100% चांसेस होते हैं कि अगर आपके पास फंडेड पोजीशन है, इसका मतलब ये है वहाँ पे आप जाके कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, आप कोई और जॉब नहीं कर रहे इलीगली, ठीक है? आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे तो आपको मिल रहे हैं, तो 100% थे इसके चांसेस। आजकल थोड़े 90% हो गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत कम लोगों को देखा है मैंने ज़िंदगी में, 2 से 3 लोगों को देखा होगा, हज़ारों लोगों में से, जिनका फुली फंडेड स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, आपको वो भेजते हैं I-20, जिसको आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हो, लेकिन मैं उसको I-20 कहूँगा, जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म I-20 भेजते हैं, I-20 पे सब कुछ मेंशन होगा कि इसको हम इतने पैसे दे रहे हैं, फीस इसकी भी कवर हो रही है, और ये है। यूएस एम्बेसी जो है, उसकी वेबसाइट है, एक इंटरनेशनल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, वहाँ पे आप एक फॉर्म फिल करोगे DS-160, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है, जैसे जो F1 जो आता है स्टूडेंट वीज़ा जो है, या J1 जो है, वो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में आता है। उसके लिए आपने फॉर्म फिल करना है DS-160। इट्स रियली इजी फॉर्म, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं हाउ टू फिल दिस फॉर्म। अगेन, इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन ईमेल मी और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। वो आपने फॉर्म करना है, वो फॉर्म फिल करने के बाद आपने चले जाना है पाकिस्तान एम्बेसी, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद और कॉन्सुलेट जनरल कराची की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपने जो आपने वो फॉर्म फिल किया DS-160, उसका नंबर डालना है, ठीक है? नंबर डालने के बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, ठीक है? पाकिस्तान में 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। स्टिल इट्स रियली गुड। यूएस हमारे साथ इस मामले में बहुत अच्छा है कि हमें नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में ज़्यादा वेट टाइम नहीं लेना पड़ता। इंडिया का 1 साल का वेट है F1 के अपॉइंटमेंट का, ठीक है? पाकिस्तान के लिए कोई वेट टाइम नहीं है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, खुद फॉर्म फिल करें, बहुत ईज़ी है, मैंने भी खुद फिल किया था, हज़ारों लोगों ने खुद फिल किया था, और हम कोई, मैं कहूँ कि मैं बहुत जीनियस हूँ, नो, आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू। ठीक है, वो फॉर्म फिल करने के बाद, एम्बेसी का फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फीस पे करनी है, जब मैं था तब 35,000 थी, आज का मुझे पता नहीं, आई थिंक सो 160 के $180 है। मीनवाइल इंटरव्यू से पहले आपने सर्विस फ़ी पे करनी है, ठीक है? सर्विस फ़ी क्या फ़ी है कि जब आप यूएस से आते हो तो आपकी एक सर्विस आईडी होती है, एज़ अ स्टूडेंट आईडी या आईडी कार्ड नंबर, वो आपको ट्रैक करते हैं। तो आपको ट्रैक करने के पैसे वो आपसे ही लेते हैं, उसको कहते हैं सर्विस फ़ी। इंटरव्यू से पहले आपने वो फ़ी पे कर देनी है, आपने 2 फ़ीस पे करनी है, वीज़ा इंटरव्यू फ़ी पे करनी है, और दूसरी आपने सर्विस फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करनी, दोनों फ़ीस पे करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगेन 1 महीने से ज़्यादा वेट टाइम नहीं है टिल नाउ, ठीक है? जब हम थे तब 15 दिन का वेट टाइम था, 16 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। इस वक़्त एक ऑन द स्पॉट आपको पता लग जाएगा आपको वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक यूरोप वेयर यू हैव टू वेट एट लीस्ट लाइक एट 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट। फॉर जर्मनी इट्स आई थिंक सो इट्स 2 इयर्स वेट टाइम। ऑन द स्पॉट आपको पता लग जाएगा। अगर आप थोड़े बदकिस्मत हुए
तो आपका वीज़ा जो है वो एपी में चला जाएगा, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग ये कहते हैं कि आपकी या फील्ड की वजह से आपकी फील्ड टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट में आती है, ओके, इसे TAL कहते हैं, टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट। दुनिया की जो टॉप की टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका उसमें पॉइनियर है, तो वो कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी चोरी ना करें, ओके। आई एम गोना से अ रियली कंट्रोवर्शियल वर्ड, हमारी हिस्ट्री है टेक्नोलॉजी चोरी करने की, बीइंग अ पाकिस्तानी, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उसकी एक एग्जांपल है। अच्छा है बुरा है उस पर हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन हिस्ट्री है हमारी कि हमने दूसरे मुल्क से टेक्नोलॉजी चोरी करके अपने मुल्क में लेके आए। अच्छी है बुरी है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन अगेन आपकी हिस्ट्री है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की कोई क्रिटिकल रिसर्च में आपकी PhD पोजीशन या मास्टर पोजीशन है, तो आपका नाम टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट में डाल के आपको एपी में डाल देंगे, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कहेंगे। 95% वीज़ा लग जाते हैं एपी में, लेकिन उसका वेट टाइम आजकल 6 से 8 मंथ है, ठीक है। किसी दौर में ये वेट टाइम 1 मंथ होता था, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हैं, ठीक है। मैं खुद एपी के थ्रू आया हूँ, मुझे ऑन द स्पॉट वीज़ा नहीं मिला था, मेरी बायोटेक्नोलॉजी थी, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट में आती है, तो मुझे 56 दिन बाद मेरा वीज़ा लग के आ गया था, ठीक है। 3 और डिसीजन लेंगे, आपका जो वीज़ा ऑफिसर इसे काउंसलर ऑफिसर कहते हैं, उसने 3 डिसीजन लेने हैं, रिजेक्ट, अप्रूव्ड, एपी, ओके। अगर आपके पास फुली फंडेड PhD पोजीशन है, आपके 90% चांसेस हैं यू विल गेट द वीज़ा ऑन द स्पॉट, अनलेस यू फॉल इन TAL, टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट। टेक्नोलॉजी अलर्ट लिस्ट को चकमा देने के बहुत तरीके हैं। मेरा दोस्त और मेरा दोनों का CV सेम था, हमने थोड़ा सा कुछ किया, तब बताऊंगा आपको, इतना झूठ नहीं बोलना आपने, आपने उनको पूरी बात नहीं बतानी, आपने वो पे बाद में एक सेशन कर लेंगे हाउ टू अप्लाई, अगर स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने USC का जिनकी पोजीशन स्कॉलरशिप हो गई है उनके लिए एक सेशन कर लेंगे कि एडमिशन आपने कैसे टेक्निकली खेलना है, आई विल यूज अ वर्ड डिप्लोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा मिलने के बाद आपने यहाँ पे लैंड करना है, 15 दिन बाद आपको आपका स्टाइपेंड पहला मिल जाएगा, दिस इज द केस, ओके। मुझे याद है जिसने मुझे गाइड किया था, मैंने कोई सेशन नहीं ज्वाइन किया था, मुझे एक बंदे ने ना पंजाबी में गाइड किया था, उसने कहा था, उसने ये कहा था, चलो मैं आपको उर्दू में बताता, उसने कहा था अप्लाई करें, मैंने कहा कैसे, कहता मेल करें, मैंने कहा अच्छा फिर मेल करने के बाद क्या होगा, कहता प्रोफेसर इंटरव्यू करेगा, मैंने कहा अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसने कहा आपका एडमिशन हो जाएगा, मैंने कहा उसके बाद नहीं, कहता उसके बाद एप्लीकेशन डालोगे, मैंने कहा उसके बाद क्या होगा, उसने कहा उसके बाद आपको वीज़ा फॉर्म आएगा, मैंने कहा फिर, कहता फिर वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा लग के अमेरिका आ जाओगे। आई स्टिल रिमेंबर 5 मिनट में उसने ये बात कर दी, और मैं कोई इतनी गहराइयों में नहीं गया, मैंने उसकी ये 5 चीज़ें फॉलो की कि मैंने क्या क्या करना है एक स्टेप पे, पहले मैंने इस स्टेप पे हूँ, अब मैं इस स्टेप पे हूँ, अब मैं स्टेप पे हूँ, तो मैंने उसकी वो बात गाइड की, अपने आप को कॉम्प्लेक्स ना करें। इशरत, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन लेटर। तो क्या नाम है, ये सीन है सिंपल सा, और दैट्स इट। आपके पास उमूमी और क्वेश्चन है? आई कैन नॉट हेयर यू, आई कैन नॉट हेयर यू, योर माइक इज म्यूटेड। जी सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारी स्कॉलरशिप में आता है, ऐसा होता है कि जब आपका वीज़ा लगने होता है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो HEC और मुफा से अटेस्टेड चाहिए होते हैं, तो ओ यहाँ पर सॉरी तो यार, हाँ मैं मिस कर गया, अमेरिकन एम्बेसी के लिए आपको ना पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, ना मोफा से अटेस्टेशन चाहिए, ना HEC अटेस्टेशन चाहिए। मैं अटेस्टेशन पहले करवा ली थी, मैं आपको अगेन चाहिए नहीं, लेकिन अटेस्टेशन करवा के रखें, फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपने USA से PhD करके आप किसी और वर्ल्ड में जा रहे हो, या USA वाले आपको कहते हैं आपकी जॉब लग गई, वो कहते हैं वी नीड अटेस्टेशन, ठीक है। वो कहते हैं हमें वर्ल्ड, वो क्या नाम है, वर्ल्ड वेब है कितना नहीं, एक वर्ल्ड, एक है ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में करती है रजिस्ट्रेशन, वो अब उसको वो कहेंगे हमें, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब हो गई है किसी कंपनी में, वो कहते हैं हमें इस एजेंसी से चाहिए, क्या नाम है, टेस्ट, इस एजेंसी से हमें टेस्टेशन चाहिए। अब आप उस एजेंसी के पास जाते हो बीइंग अ पाकिस्तानी, बिकॉज यू आर स्टिल पाकिस्तानी, वो कहते हैं HEC से करवा के लेके आओ, मुफा से करवा के लेके आओ, 5 साल के बाद हो रहा है। अब आप जलील हो गए, पहले HEC से करवाओगे, फिर यहाँ पे एम्बेसी से जलील हो गए, एम्बेसी $50 एक डॉक्यूमेंट का लेती है, कि 100 भी लेती है आई थिंक सो, तो वो मैं कह रहा हूँ करवा के आए, लेकिन अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है, पुलिस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अटेस्टेशन की। You just need 160, you just need everything, he can ask you for everything, but मेरे केस में उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, उसने बस मुझसे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मांगा, ना उसने स्कॉलरशिप लेटर मांगा, ना उसने फंडेड पोजीशन लेटर मांगा, दे नो एवरीथिंग, उनके सिस्टम में सब कुछ आ रहा है,
जब आपने DS 160 फिल किया, यूएसए दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कुछ नहीं मांगता। बैंक स्टेट, इवन मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अनरेलेवेंट एग्जांपल है, आप विजिट वीजा अप्लाई करते हो, आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगता। उनके पास सिस्टम में DS 160 में आप लिख देते हो कि क्या वो इज गोइंग टू फंड यू, और I-20 के ऊपर पैसे लिखे होते हैं। ही डोंट नीड अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। पहले वो, सर आई एम अ फाइनल ईयर BS इन बॉटनी, देयर इज देयर एनी ऑब्लिगेशन फॉर मी रिसर्च और internship required for degree, is there? Okay, there is no obligation for any research or internship required for me, is there any chance for getting graduate funding position? या यार बहुत इजी है, सॉरी मोहम्मद उमैर, यार बहुत इजी है यहाँ पे करने वाला। मैं कई लोगों को जानता हूँ, खासतौर पे नेपालीज नेशनैलिटी, ऑल्दो हम सब सेम है, इंसान है, लेकिन उनके पास सिर्फ अपना, मैं आपको कहता हूँ मैं अपना, क्या नाम है, PID, क्या सॉरी क्या नाम है, आइट्स करो। आइट्स करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन प्रोसेस देखना शुरू करो और प्रोफेसर को रीच आउट करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका। 1000 ईमेल करो, अपने आप स्कॉलरशिप लग जाएगा। If you have any time, could you please summarize the scope of biotechnology as you have similar background? पाकिस्तान में किसी का भी कोई स्कोप नहीं है। ये नहीं कि मुल्क बेकार है, अगेन मुल्क बेकार नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम ऐसे की वजह से कुछ नई चीज़ स्टार्ट ही नहीं हो सकती। इजाज, हाँ यार आपने क्या पूछना है? यस सर, मैं यस सर, यार अहमद इजाज ने क्या पूछना है, बस वो सलाम ही करी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मी हाशिम। हाँ हाशिम भाई कैसे हैं? हाशिम भाई मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। और अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मोहम्मद भाई आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर मेरा कोई क्वेश्चन अभी है तो नहीं वैसे। अच्छा, स्टूडेंट्स का सर ये होता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जो सीवी होता है हमारा, वो ज़्यादातर हम यूरोप पास सीवी यूज़ करते हैं यूरोप वगैरह के लिए, अमेरिका वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ATS सीवी भी यूज़ कर सकते हैं या जस्ट यूरोप यार पास सीवी यहाँ यूज़? पे अगेन, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सीवी किसी के पास नहीं जाना। ग्रेड स्कूल ने आपका सीवी सिर्फ देखना है बेसिक चीज़ के लिए। मेन चीज़ यहाँ पे एक ही चीज़ है, आपने प्रोफेसर सीधा करना है। और हाँ, अगर ओपन एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपका सीवी अच्छा हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सीवी ऐसा हो या सीवी वैसा हो। हाँ, यहाँ पे अगेन यूएसए, मैं ये कहता हूँ कि सबसे आसान है स्कॉलरशिप यूएसए का लेना, लेकिन सबसे मुश्किल भी है। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लकी इनफ, यार मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है लकी था, मेरी लैब की रिसर्च बहुत अच्छी थी। मेरे मेरे जो सुपरवाइजर थे वो खुद 10 साल अमेरिका लेके आए थे, तो उनके पास अच्छे रिसर्च फंडिंग थी पाकिस्तान में, ठीक है। तो हमारी लैब में अच्छी रिसर्च होती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने स्पेशलिटी सीख ली। मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था यहाँ आना, मैं सही बता रहा हूँ। अल्लाह का बहुत, अगेन मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ पे दिया। डज डू पब्लिकेशन मैटर फॉर PhD इन यूएसए? या मैटर करती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है बहुत ज़्यादा बाबर मेहर, बहुत आई थिंक सो 60 से 7 सॉरी 80% लोग यहाँ पे PhD में बगैर पब्लिकेशन के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मास्टर्स में वो रिसर्च की है जो प्रोफेसर जो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं उसकी रिसर्च से अलाइन करती है, या अपने आप को प्रेजेंट ऐसे किया है कि प्रोफेसर को ये सेंस आ गया कि ये इसकी रिसर्च मेरे से लाइन करती है। एक मिनट, और कौन है? आई थिंक सो बाबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैटर करती है, अगर नहीं है, ये नहीं है कि अब 2 साल ज़ाया करके पब्लिकेशन करनी है, अप्लाई करें। सर आई हैव डन BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी इन व्हाट कंट्री इज बेस्ट फॉर मास्टर्स? यार यूएसए बहुत अच्छा है मास्टर्स के लिए, लेकिन अगेन जब आपने पैसों के लिए जाना है किसी के पास, देखो ना एग्जांपल है यार, आपको बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, आप किसी को कहते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट दो, तो आप में क्या देखता है कि इसमें कोई खास बात हो? तो प्रोफेसर ने भी आप उसमें उसने आप में इन्वेस्टमेंट करनी है कि उसको रिटर्न में कुछ मिले, ठीक है। आप बैंक से जाके लोन लेते हो, एग्जांपल है, तो वो क्या देखता है कि इसके में पोटेंशियल आई है, वापस कर सके। तो प्रोफेसर ने जब आपको हायर करना है, अहमद इजाज, तो उसने आप में कुछ देखना है। यूएसए बेस्ट है टेक्नोलॉजी के लिए, सर्जिकल का बहुत काम है यहाँ पे, मेडिकल दुनिया का सबसे बड़ा, यूएसए में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी रिसर्च हो रही है। बट अगेन मुझे कुछ बैकग्राउंड नहीं पता कि आप अगर आप क्लिनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप कैसे PhD या मास्टर स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं, ये मुझे पता है। सर विदाउट आइट्स या टेस्ट के स्कॉलरशिप मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। पाकिस्तानियों का अगेन बुरा ना बनाना, सॉरी मुझे गुस्सा आया इस बात पे थोड़ा सा। अयान खान, यार पाकिस्तानियों का मसला यही है, आप उसका आइट्स नहीं देते और उसकी वजह से आप अपना पूरा एक कंट्री बंद कर लेते हो जिसकी 5000 यूनिवर्सिटीज हैं,
ठीक है, पूरे यूरोप और पूरे चाइना में और पूरे ऑस्ट्रेलिया में इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितनी अमेरिका में यूनिवर्सिटीज हैं, और आप अपना अपना दरवाजा ही बंद कर ले तो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी के आइट से डर के, बचपन से आप एबीसी पढ़ रहे हो, प्रेप से लेके आप यूनिवर्सिटी तक एबीसी पढ़ते हो, आप आइट से क्यों डरते हो? ठीक है, और अगेन पैसों का कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने माँ बाप का काफी पैसा खर्च करते हैं, तो भाई आइट्स दो। आइट्स के बगैर, आइट्स अगर आप नहीं दे रहे यार, आइट्स आप बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं उतर रहे, ठीक है, तो आइट्स दें। आइट्स के बगैर अगर आप ये दे, बहुत मुल्क हो सकते हैं यूरोप पूरा आइट्स के बगैर रख लेते हैं आपको, चले जाएं, लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रहा यूरोप बुरा है, लेकिन यार आप भागते क्यों आइट्स से, मुझे ये समझ नहीं आती। आप इतनी इतनी अच्छी, हमारा कोर्स वर्क पाकिस्तानियों का इतना अच्छा, इतना अच्छे लड़के हैं, यहाँ पे इंडियन और नेपाली क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि वो आइट्स से नहीं भागते। अच्छा, ओके हाशिम भाई, आई एम सामा, ओके हाशिम भाई, आई एम सामा बिन यूसुफ, ओके माय मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में इजी स्कॉलर मिल जाती है? ओ नहीं यार, ये जो ये मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है ना, इसमें स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल मिलती है। उसकी वजह ये है कि इसमें एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं यार। आप ना, अच्छा अब आपने करना कि अगर आपकी क्लिनिकल से रिलेटेड फील्ड है ना, तो आप ऐसी फील्ड में जाके मास्टर्स ढूंढें जिसमें थोड़ी रिसर्च बेस्ड मास्टर्स है। एग्जांपल, आप साइकोलॉजी में ढूंढ लें, आप पैथोलॉजी में ढूंढ लें, या व्हाट्सएवर ढूंढ लें, ठीक है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। सर आई हैव ऑलरेडी, सर आई ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई थिंक सो, आई, इजाज अहमद, हाँ यार मैंने आपका क्वेश्चन का इजाज दे नहीं दिया आंसर, इजाज, हाँ, दैट्स इट। आई थिंक क्वेश्चंस जो है वो एंड हो गए स्टूडेंट्स के। ये बाद में जो है इनके वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में हाँ, वीडियोस बिजी बाबर महर होते हैं। पीएचडी में जोलॉजी की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट, एनिमल साइंसेज डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ भी एनिमल बेस्ड रिसर्च हो रही है वहाँ पे जोलॉजी फॉल करती है। इवन के मैं, मेरा काम इंसेक्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वो भी जोलॉजी के अंडर ही फॉल करता है क्योंकि एंटोमोलॉजी उसकी फील्ड है, और मेरा डिपार्टमेंट प्लांट साइंस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है आपने डिपेंड करना है, आपने अपनी रिसर्च जो आपने मास्टर्स में किया उसको प्रोफेसर की रिसर्च से कैसे अलाइन करना है, ठीक है, और आपने कैसे ढूंढना है पीएचडी। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि पीएचडी मास्टर्स जोलॉजी में किया तो पीएचडी का टाइटल जोलॉजी ही हो। आपने ये देखना है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ये पाकिस्तान नहीं है कि अगर आपने बीएस जोलॉजी में नहीं किया तो आपको मास्टर्स जोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप रिसर्च एप्लीकेंट में दिखाओगे कोई 20 डिग्रियां लिखी होंगी प्लांट साइंस की, आपकी क्लोजली रिलेटेड फील्ड में एडमिशन, आपने मास्टर्स किया हो तो क्लोजली रिलेटेड फील्ड में आप ले सकते हो। इवन जॉब डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही होती है। चलें मोमिर, थैंक यू सो मच यार, ठीक है आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी तरफ से और सब स्टूडेंट्स की तरफ से कि आपने नो अपना बहुत प्रॉब्लम। वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमें जो है वो गाइड किया। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें खुद भी नहीं पता थी, जो हमें आज आपने जो है वो गाइड किया है अच्छे से। अगेन बहुत बिग वाला थैंक्स आपका। नो प्रॉब्लम यार, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, और ओके। कीप अप्लाइंग। 2 साल मुझे लगे, विच इज द, ओके यार एक मिनट, विच स्पेसिफिक, एक सवाल आ गया, इनका दे दें जा, विच स्पेसिफिक बायोलॉजी फील्ड इंशाल्लाह विल यू सर, रिकमेंड आफ्टर इंशाल्लाह। बैचलर फॉर दोज हु आर कंफ्यूज अबाउट देयर इंटरेस्ट? ओके, क्या यार अच्छी फील्ड है, जेनेटिक्स चले जाओ, जेनेटिक्स अच्छी फील्ड है, जेनेटिक्स पे बहुत काम हो रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चले जाओ, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीन वाइज लेवल, मतलब डीएनए आरएनए लेवल पे, जेनेटिक्स वही जिनोम वाइज जिनोमिक्स, अच्छी फील्ड है ये दो, मेरे हिसाब से दुनिया में काफी काम हो रहा है, एनिमल पे भी प्लांट पे भी। सो ये अच्छी फील्ड है। मुझे दूसरी पसंद नहीं है जिसमें इंडस्ट्रियल होती है, या दूसरी बायोटेक्नोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, फिर और उसके बाद हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, वो मोर केमिकल इंजीनियरिंग है एज कम्पेयर टू, मुझे मेरा खुद की फील्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, आरएनए डीएनए लेवल बेस्ड, तो वो मेरे हिसाब से अच्छी है, लेकिन अगेन आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपने क्या करना है। ओके मोमिर, टेक केयर यार, अल्लाह हाफिज, लेट मी नो। अल्लाह ओके, हाफिज़ सर। मैं अपना ना ईमेल एड्रेस शेयर कर देता हूँ यार, कैसे शेयर करूँ मुझे और ये नहीं पता। व्हाट ये यू कैन डू, पीपीटी में लिख के ना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करें, सब स्टूडेंट्स देख लेंगे। ओके ओके यार, मैं भी देख देता हूँ। तो या मैं, कमेंट में ड्रॉप कर दें या फिर जो है उधर पीपीटी में शो करवा दें। ये मैं कर देता हूँ, ये मेरा एनेबल एडिटिंग करके, पीपीटी नजर आ रही है आपको कि नहीं? स्क्रीन शेयर करें सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ओके,
हाँ जी, इंग्लिश लैंग्विस्टिक के बहुत स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। मैं ये एक का पता है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, और एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त है। उसका रिसर्च बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, उसने एक एवरेज रिसर्च की थी बट एक अच्छी स्टूडेंट थी, या उसमें अर्ज थी, ठीक है? और वो इस वक़्त कर रही है लिंग्विस्टिक में। लिंग्विस्टिक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, डॉक्टर नोम चॉम्स्की ने बहुत काम किया है उस पे। मेरा पर्सनल रिसर्च है, हालाँकि मेरी फील्ड नहीं है। तो हाँ, लिंग्विस्टिक में बहुत स्कॉलरशिप है। यार ये मेरी क्या नाम है, मोमिर, क्या आर यू एबल टू सी माय? यस सर। अच्छा, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ओके, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। यार तंग ना करना यार, मिस कॉल ना मारना। हाँ, 406। अच्छा, ये ना आपको व्हाट्सएप में मुश्किल होती है। हमने ना व्हाट्सएप में जब आपने मुझे सर्च करना है ना, तो आपने कंट्री चेंज करना है। लोग कहते हैं कि यार आपका व्हाट्सएप मिल नहीं रहा, तो आप जब जब आप व्हाट्सएप का नंबर ऐड करते हैं तो वहाँ पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान चेंज करके जब यूएस में जाएंगे तो यूएस आ जाएगा। उसके बाद ये मेरा नंबर लिख लेना, 40621968880। कई बार मैसेज लेट भी आ सकता है, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं 2-3 दिन बाद रिप्लाई करूंगा। यार पीआईडी का काम बहुत होता है, तो ईमेल में भी यही होगा, लेकिन मैं जैसा भी हूँ, मैं आपको हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद रिप्लाई भी दूंगा, आपकी मदद भी फुल करने की ट्राई करूंगा। इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, चलें। ओके यार, फिर मुलाकात होती है। ओके, हाँ, मेहरान इंशाल्लाह। का सवाल का जवाब दे दिया। ओके, अगेन ये मेरी डिटेल्स हैं। इफ यू रियली वांना कांटेक्ट मी, इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू नीड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अप्लाई, जस्ट लेट मी नो थ्रू दैट व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके। वालेकुम सलाम सर। जी, तो स्टूडेंट्स सब लोगों का पहले भी हमने यूएसए के ऊपर जो है वो कंप्लीट एक सेशन किया था, जिसमें आप लोगों को जो है वो कंप्लीट गाइड किया गया था। तो मैंने सोचा इसमें जो है वो आप लोगों को जो है वो फिर से जो है वो गाइड कर दें, ताकि आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।